Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 13.5. So I hope you have understood all the questions that have been done in the previous video. So now in this video we are going to move ahead from that. So we are going to discuss about, you can see, the volume of cylinders, right? So जैसा कि आपने इससे पहले देखा था जब हमने सरफेस एरिया डिस्कस किया था सिलेंडर का, सो एट दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर्स जो हैं वो किस तरीके से ऑब्टेन होते हैं बाय सिंपली प्लेसिंग द कॉन्ग्रेंट सर्कल्स वन ओवर द अदर. सो हम जब यू कैन सी सेम साइज और सेम शेप के जो सर्कल्स हैं उनको एक के ऊपर एक रखते हैं, सो वी विल गेट अ स्ट्रक्चर विच इज known as cylinders, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से circles को एक के ऊपर एक stack up किया and we have got a cylinder here, right? So now let me just tell you, just as cuboid is built up with rectangles of same size, we have seen that a right circular cylinder can be built up using circles of same size. So जैसा कि मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ लिखी हुई है. जैसा कि हमने cuboid में rectangles को एक के ऊपर एक प्लेस किया जिससे हमें क्यूबॉइड मिला, सिमिलरली हम यहाँ पे सर्कल्स को एक के ऊपर एक सेम साइज के सर्कल्स को एक के ऊपर एक स्टैक अप करेंगे, देन वी विल गेट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट? सो नाउ यूजिंग द सेम आर्ग्यूमेंट एज फॉर क्यूबॉइड, सो जैसा कि हमने क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड आउट की इससे पहले, ऑन विच वी हैव आल्सो सीन द क्वेश्चन based on that volume of, you can see, cuboid. So now you can see in this going to be in this structure, you can see cylinder. We can see that the volume of a cylinder can be obtained as, you can see, अब हम जैसा कि इसमें देख सकते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं बेस का जो सर्कल है इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय द हाइट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल्स जो हैं वो सेम एरिया के हैं, सेम साइज के हैं, दैट मीन्स ऑफ सेम एरिया. सो यहाँ पे मैं एक सर्कल, बेस के सर्कल की बात करूंगा और इसी तरह से जब सर्कल्स को प्लेस करूंगा तो एक नया डायमेंशन आएगा, दैट इज द हाइट, राइट? सो इससे पहले क्यूबॉइड में भी हमने इसी तरीके से वॉल्यूम जनरेट की थी जिसमें हमने जो ए एरिया एज्यूम किया था मैंने सभी रेक्टेंगल्स का, रिमेंबर? जिसमें आपको मैंने बताया था कि इफ आई जस्ट टेक अ रेक्टेंगल विद एरिया ए जिसकी आपको लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी गिवन है, सो इस तरह से जब मैं एक के ऊपर एक ए एरिया वाले रेक्टेंगल्स को प्लेस करूंगा तो एक मेरे पास नई डायमेंशन आएगी, दैट इज हाइट. So then we know that L into B into H. So आप देख सकते हैं एरिया जो कि बेस का था इनटू में हाइट कर दिया था जो नई डायमेंशन आई थी. So area was length into breadth and then by height. So that was the, you can see, the volume that we have obtained for the case of cuboid, right? So similarly यहाँ पे भी इसी तरीके से हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे सिलेंडर की. So यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस का जो एरिया है सर्कल का, then सभी सर्कल्स का एरिया सेम ही होगा. So I have taken the base area मल्टीप्लाई बाय द न्यू डायमेंशन जो कि एक के ऊपर एक सर्कल रखने पे आई है, दैट इज द हाइट, राइट? सो बेस का एरिया इनटू में हाइट, दैट विल गिव अस द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, राइट? सो आप देख सकते हैं बेस का एरिया यानी कि इस बेस में क्या शेप आ रही है, आप देख सकते हैं सर्कुलर बेस है, राइट? सो सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट? इनटू में यू कैन सी द न्यू डायमेंशन हाइट, सो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, इनटू में हाइट, दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर एच, राइट? So this will be simply the formula to calculate, you can see, the volume of any given cylinder, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है, that is pi r square h, जिसमें pi की वैल्यू हमें पता है, unless stated we have to take 22/7 और अगर given है 3.14 then we can use that. Then ये r क्या है, that is simply the base radius, right? So यहाँ पे base है उसकी radius है and h is simply the height of the cylinder, right? So you can see this is the formula by which you can see we can find out the volume of any given cylinder. So that was all in this topic. So students, now as we have seen the formula to calculate the volume of a cylinder, that is by pi r square h. Now let us see an example by the help of which we can just simply solve the question. So let us see the example here, straightforward. So example क्या है आपके पास यहाँ पे, the pillars of a temple are cylindrically shaped. So यहाँ पे एक टेम्पल है जिसके पिलर्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में है. Now if each pillar has a circular base of radius 20 centimeter, right? So अगर मैं एक पिलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं like this,
So you can see the pillar is in the cylindrical shape. अब यहाँ पे आपको given है that the base radius is, you can see 20 centimeter, right? So यहाँ पे 20 centimeter की base radius आपको given है. So also you can see the height is given to us as, you can see 10 meters, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं radius तो सेंटीमीटर में है, but height किसमें? Meters में, right? So further, how much concrete mixture would be required to build 14 such pillars? So इसी तरह के 14 pillars जो हैं बनाने में कितना कंक्रीट मिक्सचर लगेगा, राइट? सो सबसे पहले हमें यू कैन सी एक सिलेंड्रिकल पिलर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पड़ेगी. देन जितनी वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल पिलर की होगी उतना ही कंक्रीट मिक्सचर इसको बनाने में लगेगा, राइट? सो हमें ऐसे कितने सिलेंड्रिकल पिलर्स बनाने? टोटल 14 पिलर्स, राइट? सो मैं इस एक सिलेंड्रिकल पिलर बनने में कितना वॉल्यूम लगता है वो कैलकुलेट करूंगा and multiply it by 14 so that to get the total concrete mixture required to make 14 such pillars, right? So इस तरीके से इसको solve करूंगा. Now we know how to calculate the volume of this cylindrical pillar by the formula pi r square h, right? जो मैंने आपको बताया, right? So now let us start off this solution with the given thing. So हमें यहाँ पे given क्या है? सबसे पहले base radius, right? So base radius, that is r, is given to us as 20 centimeter, right? Now further हमें यहाँ पे क्या given है? Height. So height is 10 meters, right? So यहाँ पे आपको पहले क्या करना होगा? इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा या आप इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए. So that is easy because मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, right? So मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई. So that will be, you can see 1000 centimeters, right? Now both are in centimeters, so let us apply the formula to calculate the volume of cylindrical pillar, right? So what is the formula? That is pi r square h. So pi की वैल्यू आपको पता है 22/7 into r square. So radius कितनी है आपके पास? That is 20. So 20 square into height, you can see that is 1000. So यहाँ पे अगर इसको मैं further solve कर लेता हूं, so you can see 22/7 as it is. Now 20 का square क्या होगा? 20 into 20 into 1000, right? So now what you have to do is simply solve this. So इसको कैसे solve करेंगे? सबसे पहले आप देखिए इनको multiply करना पड़ेगा, right? All these. So यहाँ पे 22 into 2 44, 44 into 2 that is 88, and you can see 2 zeros. So यहाँ पे 88 and 2 zeros into, you can see 1000 divide by 7. So आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा? 88 1 2 3 4 5. So 88 1 2 3 4 and 5 divide by 7, right? So this is going to be in centimeter cube, right? हमेशा ध्यान रखिए वॉल्यूम जो होती है वो क्यूबिक यूनिट में निकलती है. मैंने आपको पहले भी बताया था, right? So जो एरिया होता है वो स्क्वायर में निकलता है, right? So this is the basic thing. यहाँ पे क्यूबिक यूनिट में निकलेगी. So सेंटीमीटर क्यूब में क्या आएगा? वॉल्यूम आ गया इस सिलेंड्रिकल पिलर का, राइट? नाउ यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू मीटर क्यूब, राइट? सो अगर आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो लेट मी जस्ट टेल यू, इफ आई जस्ट रब दिस, सो यहां पे हमें ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट? ये हमें पता है. नाउ अगर मैं यहां पे आपको बताऊं कि इधर मैं मीटर क्यूब कर देता हूं, सो मुझे वहां पे सेंटीमीटर का भी क्या करना होगा? क्यूब करना होगा. सो 100 का क्यूब क्या होता है? 3 टाइम्स 0 कर दो. सो 1 2 3 4 5 6. सो 2 जीरोस को 3 टाइम्स करेंगे तो 6 जीरोस हो जाएगी. सो 2 2 2. सो दैट विल बी 6 जीरोस, राइट? सो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? दैट इज 10 lakh centimeter cube, right? You can count the zeros 1 2 3 4 5. So 10 lakh centimeter cube. So अब अगर मुझे मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो मुझे 10 लाख से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में करना है तो मुझे डिवाइड करना होगा 10 लाख से. गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ मुझे क्या करना है? सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है, तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा इसको किससे? 10 लाख से, राइट? सो व्हाट इट विल बी, यू कैन सी, सो द वॉल्यूम ऑफ, you can see, cylindrical pillar
is equal to, you can see यहाँ पे कितना था आपके पास 88, 1, 2, 3, 4, 5. Let me just count the zeros. So there are 5 zeros. Divide by 7, right? So मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? Simply by 6 zeros. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can see here that is 10 lakh. अब आप देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया. अब ये डिवाइड का साइन, लेट मी जस्ट टेल यू, ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये डिनोमिनेटर वाली चीज क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल. सो 1 अपॉन, यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? और यहां पे क्या आ जाएगा? 88, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाय 7. नाउ लेट मी जस्ट काउंट द जीरोस. सो 5 जीरो से 5 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगी. देन यू कैन सी यहाँ पे 10 बचा. सो डिनोमिनेटर में कितना है? 10 है. सो व्हाट इट विल बी, यू कैन सी ये 0 है. सो यहाँ पे 8 से पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा. सो 8.8 डिवाइड बाय 7, राइट? नाउ दैट विल बी इन मीटर क्यूब. आप देख सकते हैं 88 अपॉन 10 क्या होगा? 8.8 और डिवाइड में 7 एज इट इज, राइट? सो मैंने ये सॉल्व कर दिया. 88 अपॉन 10, एक जीरो तो एक डिजिट से पहले डेसिमल, राइट? सो यहाँ पे 8.8 अपॉन 7 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल पिलर, राइट? नाउ हमारे पास कितने और पिलर्स की कंक्रीट निकालनी है मुझे? 14 सच पिलर्स की. कितनी कंक्रीट मिक्सचर लगा होगा इनको बनाने में, राइट? सो मैंने एक की वॉल्यूम निकाल ली. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 14 से, सो एज टू गेट द कंक्रीट मिक्सचर रिक्वायर्ड टू मेक 14 सच पिलर्स, राइट? So let me just make some space here. So concrete mixture required to make 14 such cylindrical pillars is equal to, you can see, एक कंक्रीट पिलर की जो वॉल्यूम है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 14 से, राइट? सो यू कैन सी 7 1 7, 7 2 14. सो दैट्स व्हाई मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, राइट? नाउ द कैलकुलेशन इज बिट इजियर. सो यहाँ पे 8.8 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? सिंपली 2 से. सो दैट विल बी लाइक 2 8 16, 1 कैरी, देन अ डेसिमल, 2 8 16 प्लस 1 17, राइट? सो दैट विल बी 17.6, right, in meter cube. So this is going to be, you can see, simply the concrete mixture required to make 14 such cylindrical pillars. So that was all in this example here. So students, let us move on to the next example now. So this time example number 14th is given to us as, let me just read it first. So at a Ramzan Mela, a stall keeper in one of the food stall has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeters. So यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एक रमजान मेले के अंदर एक स्टॉल कीपर है जिसने एक फूड स्टॉल के अंदर क्या लगाया है? एक लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल लगाया है. So let me first draw a large cylindrical vessel, right? So this is the vessel here. Now इसकी जो बेस रेडियस है वो हमें गिवन है, दैट इज 15, you can see, centimeters, right? So this is the base radius. So मैं इसको कैपिटल R से ले रहा हूं, right? Now you can see this cylindrical vessel having the base radius 15 centimeter is filled up to a height of 32 centimeter, right? So ये filled है, आप देख सकते हैं, up to a height of, you can see, 32 centimeters, right? With orange juice. So इसमें क्या filled है, आप देख सकते हैं, orange juice, right? So now let me just read further. So यहाँ पे given है, the juice is filled in small cylindrical glasses of radius, you can see, 3 centimeter up to a height of 8 centimeter, right? So अब ये जो juice है ये क्या है? small cylindrical vessels में fill किया जाता है, right? So let me just draw some vessels here like this. So these are the, you can see, cylindrical glasses. You can see इसके अंदर अब ये orange juice को fill किया जाता है. You can see these cylindrical glasses have, you can see, the radius of 3 centimeter, right? So इनकी radius कितनी है आप देख सकते हैं, 3 centimeters. Now इनको fill कितनी height तक किया जाता है? Up to
8 centimeter, right? So they are filled up to 8 centimeter here, right? Getting my point? So this is also 8 centimeter and this is also 8 centimeter, right? Now and sold for 15 rupees each. So आप देख सकते हैं यहाँ पे इस cylindrical vessel में क्या प्लेस था, orange juice, जिसको कि इन cylindrical glasses में fill किया जाता है up to the height of 8 centimeter and then each cylindrical vessel is sold for 15 rupees. Getting my point? So हमें यहाँ पे क्या निकालना है, how much money does the stall keeper receive by selling the juice completely? So कितने मनी जो है वो स्टॉल कीपर के पास आएगा अगर वो ये पूरा का पूरा इस सिलेंड्रिकल यू कैन सी वेसल का जो जूस है इसको सोल्ड कर देगा, राइट? सोल्ड कर देगा, राइट? सो लेट मी जस्ट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यू कैन सी द जूस इन दिस कंटेनर, राइट? सो यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करूंगा जितना इस कंटेनर के अंदर जूस है, राइट? सो लेट अस नाउ स्टार्ट ऑफ माय सॉल्यूशन विद द गिवन थिंग. So यहाँ पे given क्या है आपको, simply you can see the base radius of cylindrical vessel, right? So कितनी given है आपको, that is you can see 15 centimeters, right? Then further आपको क्या given है, height of this vessel, right? So the height of cylindrical vessel is you can see 32 centimeters. So this is what is given in the question. Now हमें पता है कि इन दोनों चीजों की requirement होती है to find out the volume of a cylinder, right? That is pi r square h, right? So जितना you can see इस vessel के अंदर orange juice की volume है, that will be calculated by the formula pi r square h, right? So let me just now find out the volume of juice in cylindrical vessel is calculated by pi r square h. So यहाँ पे मैं radius क्या लूंगा, capital R, right? So let me just tell you also कि यहाँ पे ये जो मैं cylindrical glasses है इनकी radius small r से represent करने वाला हूँ, right? So simply the radius of the small cylindrical you can see glasses is taken as smaller and the radius of this large cylindrical vessel is taken as capital R, right? Also यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसकी small cylindrical glasses की height को मैं small h से ले लेता हूं और इस vessel की height को मैं क्या ले लेता हूं, जहां तक juice filled है that is capital H, right? So differentiate हो जाएगा आपके पास vessel और glass के बीच में, right? So the vessel is having the radius capital R and height capital H, whether the cylindrical glass has the radius smaller and height small h, right? Now यहाँ पे height भी क्या आएगी, h capital. So now pi की वैल्यू आप यहाँ पे क्या कीजिए, पाई एज इट इज रहने दीजिए. आई विल टेल यू लेटर कि क्यों मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की. नाउ रेडियस का स्क्वायर, सो व्हाट इज द रेडियस हियर, यू कैन सी दैट इज 15 सेंटीमीटर, राइट? एंड दिस इज द हाइट हियर. सो रेडियस कितनी है आपके पास, 15 स्क्वायर इंटू एच. सो व्हाट इज एच, दैट इज 32, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई इंटू 15 इंटू 32. सो लेट मी जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट? अब क्या करूंगा मैं, अब इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस की भी वॉल्यूम फाइंड आउट करूंगा जितना जूस इसके अंदर फिल किया जाता है, राइट? सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट नाउ. सो स्टूडेंट्स, नाउ you can see the volume of juice in cylindrical glasses again can be calculated by the formula to calculate the volume of cylinder, that is pi r square h. Now you can see यहाँ पे मैंने radius जो है small r लिए और height भी small h, that is of the cylindrical glass. So let me just now keep this pi as it is, multiply by radius. So यहाँ पे glass की radius कितनी है, that is 3. So 3 square into the height, that is 8. Now you can see pi, now 3 square का मतलब 3 into 3 into 8, right? So let me just give it equation number second, right? So ये हुई volume of juice in this cylindrical glasses, right? Now जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जितना भी इसमें जूस है इस cylindrical vessel में, अगर मैं इसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं
एक सिलेंड्रिकल ग्लास के अंदर जितनी जूस है उसके वॉल्यूम से, then we will simply get the number of glasses which can be filled by this juice in this cylindrical vessel. So मैंने आपको पहले बताया जब भी हमें number of something find out करना होता है, हम क्या करते हैं, पूरे you can see वॉल्यूम जो है कंप्लीट you can see इस वेसल की किससे डिवाइड करेंगे, by the volume of each you can see glass having the juice, right? So now let me first make some space here. So you can see the number of cylindrical glasses that can be filled by juice in vessel will be equal to, you can see, by dividing the volume of juice in cylindrical vessel by, you can see, the volume of juice, let me just rub this, in, you can see, cylindrical glass, right? So यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है from the first equation मैंने कैलकुलेट किया था volume of juice in cylindrical vessel, that was pi into, you can see, 15 into 15 into 32 divide by, you can see, the volume of juice in cylindrical glass will be obtained from equation number second जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, that was pi into 3 into 3 into 8, right? Now let me just make some space below. So if I just solve this, आप देख रहे pi से pi cancel out हो गया. Now you can see 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, and then 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, right? So ये reduce हो गए हैं टेबल के ऊपर. Now you can see numerator में क्या आ गया, 5 into 5 into 4. So 5 5 जा 25, 25 into 4, that is 100 glasses, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेसल के अंदर जितना ऑरेंज जूस है उससे टोटल 100 सिलेंड्रिकल ग्लासेस जो है फिल हो सकते हैं कंप्लीटली, राइट? सो यहाँ पे मुझे ये पता है कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास कितने रुपीस का सेल होता है, दैट इज 15 रुपीज. सो यहाँ पे टोटल 100 ग्लासेस जो हैं ये कितने के सेल हो जाएंगे फिर, 100 into 15, राइट? एंड दैट विल बी द मनी, यू कैन सी, दैट विल बी collected by, you can see, selling the cylindrical glasses at 15 rupees each by the stall keeper, right? So if I just rub this down, so you can see the money collected by stall keeper by selling the complete juice in vessel will be, you can see, 15 into 100 glasses. So एक glass 15 rupees का, so 100 glasses will be of 1500 rupees, right? So this will be the money received. You can see that will be better. You can see the money received, right? So the money received by the stall keeper by selling the complete juice in this, you can see, cylindrical vessel, you can see that will be 1500 rupees, and that is what we have to find out in this question. So that was all in this example here.